और रेडी। आज हम फिर 50 क्वेश्चंस जीके, ठीक है। जीके क्वेश्चंस करेंगे 50 और भी, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन, which direction does the sun rise in? सनराइज किस डायरेक्शन में होता है? यस, द आंसर इज ईस्ट, in east. And in which direction the sunset? West. ठीक है, sunrise in east and sunset in west. Okay, याद रहेगा। Next, how many legs does a spider have? स्पाइडर के पास कितने लेग्स होते हैं? आंसर इज 8 legs. Spider have 8 legs. Ant have 6 legs. ठीक है। ये मत करना कि सर ने बताया नहीं कि आंट, सर ने तो स्पाइडर बताया था, आंट का नहीं बताया। पहले बता दो, आंट है 6, स्पाइडर है 8 legs. Next, what do we call a person who flies an airplane? Pilot. Answer is a pilot. ठीक है। Next, which planet do we live on? हम जिस planet पे रहते हैं उसका क्या नाम है? The name is Earth. ठीक है। हम जिस planet पे रहते हैं उसका नाम क्या है? Earth. Next, what is the hardest natural substance on Earth? That is diamond. Diamond is the hardest natural substance on Earth. Clear? Next, which animal carries its baby in a pouch on its tummy? The answer is kangaroo. Kangaroo अपनी बेबी को अपने पाउच में रखता है ना, टमी पे होता है। Yes. Next, how many teeth do adult humans usually have? That is 32. Next, what is the main source of light and heat for our planet? हीट और लाइट अपने प्लेनेट को कहां से मिलती है? सन। आंसर है सन। ठीक है। नेक्स्ट, which gas do plants need to make their food? प्लांट्स को कौन से गैस की नीड होती है फूड बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी कलर ऑफ ripe स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी का कलर क्या होता है पकने के बाद? रेड, है ना। नेक्स्ट, what do we call a scientist who studies stars and planet? Stars और planet, स्टार्स प्लैनेट के जो स्टडीज करते हैं उनको क्या, उन साइंटिस्ट को क्या कहता है? एस्ट्रोनॉमर। ठीक है। Which is the largest ocean on earth? लार्जेस्ट ओशन कौन सा है अर्थ पे? आंसर इज पैसिफिक ओशन। इंग्लिश में द पैसिफिक ओशन, हिंदी में उसको क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। ठीक है।
Next, what do we call a group of fish swimming together? Hmm? A school. फिश का भी स्कूल होता है ना, तो साथ साथ रहती तो उसको भी स्कूल कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which vegetable is orange and is loved by rabbits? Rabbits क्या खाते हैं? पैरट, है ना? Yes. Next. How many minutes are in 1 hour? 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं? 60 minutes. आंसर is 60 minutes. और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? वो भी 60 होते हैं। ठीक है, इन 1 मिनट 60 seconds, in 1 hour 60 minutes. याद रहेगा? Next. What is the name of the white fluffy things in the sky that brings rain? The answer is cloud. बारिश कौन लाता है? क्लाउड्स लाते हैं ना? Yes. Next. Which is the tallest animal in the world? Tallest animal in the world. Giraffe. Answer is giraffe. अब अगर ये पूछ दिया which is the tallest animal या which is the largest animal in the world? Largest animal in the world, that is elephant. Tallest animal in the world, that is giraffe. ठीक है, next. What do we call the study of dinosaurs? डायनासोर की स्टडी जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा टफ है, तो आउट ऑफ 40 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे, पहले बता दूं। ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चन आर लाइक दिस। दैट इज पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी। मतलब ये इतना याद ही नहीं होती है ना? नेक्स्ट, which season comes after winter and before summer? विंटर के बाद और समर से पहले कौन सा सीजन आता है? स्प्रिंग, स्प्रिंग। नेक्स्ट, what is the name of the imaginary line that divides the earth into north and south? The equator. Okay, that is equator. Next, what sport uses a heavy ball with 3 holes for your fingers? ये जितने लोग लुल्लू मॉल में गए होंगे गेमिंग सेक्शन, उनको पता। लुल्लू मॉल में एक गेमिंग सेक्शन है, उसका उसको कहते हैं बॉलिंग। चलो मैं उसका एग्जाम का समझाता हूँ आपको। ट्रैक होता है, ट्रैक के लास्ट में 8 पिन्स रखी होती है, वास्ट टाइप में 8 पिन्स रखती है। आप बॉल फेंकते हैं, उसको हिट करना होता है। ठीक है, उसको कहा जाता है बॉलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, which sport is played on ice while wearing special shoes with metal blades? That is ice skating. ठीक है, next, what do you call the person who catches the ball behind the batter in basketball? Sorry, in baseball. बेसबॉल देखा है ना? बेसबॉल में जो बैटिंग कर रहा होता है उसके ठीक पीछे एक प्लेयर होता है जो बॉल को
कैच करता है उसको क्या कहते हैं? जैसे क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में क्या कहते हैं? कीपर, विकेट कीपर। बेसबॉल में उसको क्या कहते हैं? कैचर। बेसबॉल में द कैचर। ठीक है, तो नेक्स्ट। हाँ, in which sport do you throw a heavy metal ball as far as you can? किस स्पोर्ट्स में बॉल को, जो हैवी बॉल होता है उसको कंधे के आसपास रख के जोर से फेंका जाता है, दैट इज शॉट पुट। दैट इज शॉट पुट। अब चलो इस पे मुझे क्वेश्चन याद आया। सबको पता है व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया मैंगो। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया बैनिया। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बंगाल टाइगर। नेशनल फ्लावर लोटस। लेकिन एक मुझे रिसेंटली पता चला, मैं ये नहीं जानता। आप लोगों के क्वेश्चंस ढूंढते ढूंढते मुझे पता लगा, व्हाट इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया? नेशनल वेजिटेबल दैट इज pumpkin. Pumpkin is the national vegetable of India. ठीक है, याद रखना। Now, what is the name of the equipment used to protect your head while cycling? साइकिलिंग करते वक्त आपके हेड की प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको क्या कहते हैं? हेलमेट। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। हाउ मेनी प्लेयर्स आर ऑन अ वॉलीबॉल टीम ऑन द कोर्ट? वॉलीबॉल टीम में एक साइड से कितने प्लेयर होते हैं? 6। ठीक है, कितने होते हैं? 6। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल द स्कोर ऑफ अ जीरो इन अ गेम ऑफ टेनिस? अब जितने लोग टेनिस या बैडमिंटन खेलते होंगे उनको पता होना चाहिए कि जब स्कोर बिल्कुल जीरो होता है तो उसको क्या कहा जाता है? फॉर एग्जाम्पल 4-0 हुआ स्कोर, तो उसको क्या कहेंगे? जीरो रहेगा, क्या कहते हैं? लव। जीरो को हम कहते हैं लव। लव ऑन, फोर लव। अगर 4-0 तो 4 लव, 5 लव। जीरो को कहा जाता है लव। इन टेनिस भी और इन बैडमिंटन भी, दोनों में, दोनों में जीरो को लव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। Which sports involves jumping over a high bar using a long flexible pole? Pole vault. The answer is pole vault. What do you call a person who learns martial arts like karate or judo? मार्शल आर्ट जो सीखता है या कराटे या जूडो जैसा सीखता है उसको क्या कहते हैं? अ मार्शल आर्टिस्ट। ठीक है, जुडो का आर, अ कराटे का। नेक्स्ट, which game involves hitting a shuttlecock over a net? शटलकॉक किसमें यूज करते हैं हम? बैडमिंटन में। यस, ठीक है। अब शटलकॉक की जगह बोलता है which game involves hitting a ball over a net, तब होता है टेनिस। ठीक है, नेक्स्ट। what is the main goal in a game of tug of war? Suppose the rope towards your side, simple। टग ऑफ वार में क्या रूल होता है? ये होता है कि सामने वाले लोगों को अपनी तरफ खींचा जाए। Yes. Which sports requires a horse and a long mallet
to hit a ball. पोलो, पोलो में हॉर्स पे बैठ कर क्या होते हैं लाइक गोल्फ स्टिक से बॉल को हिट किया जाता है। हाँ। What do you call the circular track where athlete run? जो सर्कुलर ट्रैक होता है जिसपे आप लोग दौड़ते हैं या स्पोर्ट्स में दौड़ता है उसको क्या कहते हैं? रनिंग ट्रैक। ठीक है, रनिंग ट्रैक। नेक्स्ट, व्हाट इज अ होम रन इन बेसबॉल? When a batter hits the ball out of the field and run all bases. बेसबॉल में टोटल 4 बेस होते हैं। ठीक है, अगर कोई बैटर यानी बैट्समैन बॉल को फील्ड के बाहर मार देता है और चारों प्लेयर्स चारों ही बेसिस पे एक एक चक्कर कर लेते हैं तो वो कहता है होम रन। ठीक है, नेक्स्ट, which sport is played on a table with a small white ball and 2 rackets? 2 rackets और एक छोटी सी टेबल उस पे एक व्हाइट बॉल, दैट इज टेबल टेनिस, पिंग पोंग। नेक्स्ट, who was the first person to step on the moon? मून पे जाने वाले सबसे पहले पर्सन का क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का नाम मून पे जाने वाले फर्स्ट पर्सन दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे पहले फ्रॉम इंडिया स्पेस में जाने वाले पर्सन का नाम राकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट, which is the largest continent in the world? The largest continent in the world is Asia. That is Asia. And the smallest continent in the world, that is Australia. Australia सबसे छोटा है and सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। ठीक है, नेक्स्ट, what is the name of the festival of light celebrated in Sikkim? That is गुरुपर्व, आज बंदी छोड़ दिवस, गुरुपुरब। ठीक है, नेक्स्ट, which state in India is known as the land of 5 rivers? That is, yes, the same, Punjab. Punjab is known as the land of 5 rivers. ठीक है, next, what do we call the person who leads a country's government? The Prime Minister. ठीक है, next, which famous monument in Delhi is memorial to Indian soldier? इंडियन सोल्जर के मेमोरियल पर दिल्ली में कौन सा मॉन्यूमेंट है? इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट किस पे है? मेमोरियल टू द इंडियन सोल्जर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग? नेम ऑफ द इंडियाज नेशनल सॉन्ग, दैट इज वंदे मातरम। ठीक है, नेक्स्ट, which holiday is celebrated on October 2nd every year? 2 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? यस, गांधी जयंती। ठीक है, नेक्स्ट, what is the name of the computer device you use to type letters? कंप्यूटर पे आप लेटर्स को टाइप किससे करते हो?
कीबोर्ड, आसान था ना? हाँ। नेक्स्ट, हु रोट ऑफ नेशनल एंथम जनगण मन? जनगण मन किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, what do we call a person who designs building? Architect. That is architect. Next, which is the smallest state in India by area? By area smallest state कौन सा है? भाई स्टेट जहां पर आना और जाना दोनों है, जिसके वर्ड में दोनों आता है। यस, गोवा। गो, हाँ, गो का मतलब जाना, आ का मतलब आना। ठीक है, गोवा इज द स्मॉलेस्ट state in India by area. The largest one is Rajasthan. Okay. Next, what is the name of the big bridge in Mumbai that connects the city across the sea? Bandra Worli Sea Link. Next, what is the capital of Uttar Pradesh? ये बताओ। That is, yes, Lucknow. Okay. Which day is celebrated as World's Environment Day? Fifth June. That is 5th June. ठीक है, नेक्स्ट। So these are the 50 questions. अब आज के क्वेश्चंस मैं टफ लेके जाना